episode of Wisdom Waves Wednesday, where we bring you incredible insights, actionable strategies, and inspiring stories to help you thrive in every aspect of life. Today's topic is something which is close to my heart and every parent's heart. Resilient parenting turns struggles into strength. In today's world, parents juggle with so many challenges, and resilience is just not a buzzword, it's a superpower. And to explore that, I am thrilled to introduce someone who's truly inspiring. Kushal Kulkarni. He's a coach, getting things done expert, and someone who has redefined what resilience means in the face of incredible challenges. We so much welcome you, Kushal. Thank you so much for coming in this live session. It truly means a lot. Thank you, Swati. Thank you for inviting me here, and it's my honor to be here and share screen with a wonderful person like you. It's my pleasure. Thank you, No, it is our pleasure for sure. thank you. Incredible people things. So I think you are visually understanding how incredible you are. So automatically you feel others are also incredible. It's about the vision you have because it's you who is seeing it. So right, right. uh, Thank you for that. so, um, so Kushal, first let's start with your Yeah. own story. So can you tell us why is your story a resilient story, and what exactly turned was a turning point of your life? What was your reality of situation, and how did you take that massive setback into your greatest strength? Hmm. So one question covering everything, huh? Yes, absolutely. Thank you for that. So, introducing myself, taking you people to my story. My name is Kushal Kulkarni, KK for short. This is what people call me. I'm sorry. So you asked me about resilience. Hmm. So I would like to share to everyone that if you are able to see me, I cannot see like you people. Okay, so it was something happened to me almost 3 years back. I lost my eyesight because of a rare eye disease, and it was suddenly like the last days of 2021 was so rapid. Like last 2 3 months, it was like down, and gone, Right. dropping, gone. Hmm. No, so getting back to the point of resilience, there's a story behind that because I never thought anything from resilience point of view, but I was thinking from current situation that I was going through. Hmm. It was in 2021 when I observed that there is something change happening in my vision. And already I Okay. was knowing I was going with a rare eye disease, but Hmm. as I was moving in 2021 August, I was diagnosed with dengue, and it was COVID time भी चल रहा था. So Hmm. Swati, just let me know, is it okay to drive it in only English, or you want, is it okay नहीं if I नहीं, do? हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बिल्कुल, हम हिंदी Yeah, इंग्लिश वाले लोग हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो प्लीज फील exactly, फ्री. exactly. So it was 2021. I recovered from dengue, and what happened was I observed कि मैं जहाँ पे देख रहा हूँ ऐसा लग रहा था कि चीजें नाच रही हैं मेरे सामने. एक स्टेबिलिटी नहीं था विजन में, एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, अभी अभी सिकनेस से उठा हूँ, हो सकता है अभी रिकवर पूरा नहीं हुआ. हम्म. आई गेव सम स्पेस टू माई सेल्फ, बट हम्म. ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर इट स्टार्टेड गिविंग मी स्ट्रोक्स. मतलब अब ये मैं इंटरनली पैनिक होने लग गया था हम्म. कि नो, दिस इज नॉट समथिंग अबाउट वीकनेस, क्योंकि वीकनेस मुझे बॉडी में तो नहीं लग रही है. हम्म. I started figuring out there is surely something going wrong. And believe me, 10th December 2021 was the last time when I saw the faces of my loved ones. 10th Right. December 2021. And हम्म. you asked me about resilience. It was those days only.
when I was losing out my eyesight. Hmm. The thing that was happening to me was, जब मैं किसी को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि सामने वाला बंदा प्लास्टिक पहन के खड़ा है, मुझे क्लैरिटी नहीं। हैव यू सीन क्रश्ड प्लास्टिक? Hmm. Hmm. एक Hmm. प्लास्टिक जिसमें हम कुछ पॉलीथीन जैसा होता है, उसको क्रश करके देखिए कैसा दिखता है। Hmm. वेव्स Hmm. वेव्स काइंड ऑफ थिंग। क्लैरिटी Right. उस प्लास्टिक के उस तरफ क्या है आपको पता नहीं है। मैं पता नहीं लिटरली है। लिटरली हम्म, मतलब मैं बैठे बैठे अपनी वाइफ को, अपने मॉम डैड के चेहरे को देखता था, एंड मैं तो लिटरली अपनी बच्ची को जाके ऐसे टच करके देखता था कि कुछ, इट वाज सो, मतलब स्कैरी भी था, बट सिचुएशन हम्म, रियल भी था। मतलब हम्म, दैट वाज सो इरिटेटिव, स्ट्रेसफुल, एवरीथिंग। एंड हम्म। सडनली स्टार्टेड नोटिसिंग कि ये तो जा रहा है बॉस। वाओ। नजर नजर तो ड्रॉप हो रहा है फॉर श्योर। हम्म। It went off suddenly. My goodness. And one day I was in the midst of this losing out eyesight, वो जो transition period हो रहा था, sight to हम्म, sight. It was one evening. I was working with my, मतलब मेरा वर्क स्पेस जो है, मेरे मेरे डैड भी अपना काम करते रहते थे लेफ्ट साइड में बैठ के, और हम हम्म, कुछ बातें, हमारी बातें करने की आदत थी काम करते करते, कभी कुछ शेयरिंग हो जाती, कुछ फन शेयर कर लेते बेटी के बारे में। हम्म, आई जस्ट लुक टुवर्ड्स हिम लेफ्ट साइड, और उनके पीछे एक मूर्ति हुआ करती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाला। तो मैं हम्म, उस तरफ देखता तो एक ग्लांस भी कर लेता, पढ़ भी लेता था। तो मैंने देखा यार ये दिखाई नहीं दे रहा, फादर का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा, मेरे मेरे आई फेल्ट देयर इज नो स्ट्रेंथ इन मी। मैं वहां से उठा और मैं नीचे आया, अपने रूम में लेट गया। हम्म, मेंटल पैनिक स्टेट था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस रुक रही है। दैट वाज सो आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू इन वर्ड्स स्वाति, बट ऐसा लग रहा था कि अब खत्म है सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि सांस फंस जाएगी, एंड आई विल जस्ट, आई एम लूजिंग आउट एवरीथिंग। एंड सडनली आई वेंट आउट इन द हॉल। माय डैड हैड आल्सो कम डाउन। वहां पे मेरे फैमिली फ्रेंड आए हुए थे, मेरी बेटी थी, मेरी माँ थी, और मेरे डैड। हम्म, जैसे मैं हॉल पे पहुंचा, आई लॉस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ माय बॉडी, आई फेल ऑन माय नीज एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, आई ब्रोक डाउन। दैट वाज हेवी पेन। आई सेड हम्म, लाइक, अब दिखाई नहीं दे रहा, आई एम लूजिंग इट आउट, आई कैन नॉट टेक इट। एंड माय डैड वाज लाइक, मेरे पापा अपना हाथ फेर रहे थे मेरे बालों पे, इट्स सर पे, कि इट्स ओके, काम डाउन, काम डाउन। बट आउट ऑफ इट, you asked me about resilience, right? That was the day I हम्म, remember, अचानक से मेरी माँ की आवाज आई, एंड शी वाज लाइक, आई एम अ मराठी स्पीकिंग गाय, मेरी मदर टंग मराठी है। सो शी सेड, प्लीज स्टॉप, विया इज गेटिंग अफ्रेड। उसने मराठी में बोला मुझे, और जैसे ही उसने, विया इज माय डॉटर्स नेम बाय द वे, विया। वाओ। जैसे मैंने उसका नाम सुना ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सेंसेस पूरे कंट्रोल में आ गए, हम्म, कि वेर इज शी। तो मैंने देखने की कोशिश करी, दिख नहीं रहा था, बट मैंने वो सेल्यूएट काइंड ऑफ वो दिखाई, मतलब दिख रहा था कि पिक्चर कोई खड़ा है सामने से, क्लैरिटी नहीं। हम्म, मैंने बोला हम्म, बेटी को, और वो डर रही थी, क्योंकि माय बिहेवियर वाज वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड। आप सोचिए ना, एक बच्ची के सामने उसका बाप अगर रोते रोते गिर जाए उसके सामने, चार, शी वाज जस्ट 4 इयर्स, वो मतलब क्या होगा उस टाइम पे, हाँ, हाँ। 5 इयर्स का बच्चा क्या सोचेगा। एंड मैंने कंट्रोल किया, एंड आई कॉल्ड हर कि कम हियर। मैंने मैनेज किया, बोला प्लीज आई देयर। द हम्म, मोमेंट शी केम, आई हग्ड हर, और मैंने हम्म, अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं ये सिचुएशन, आई एम नेवर गोइंग टू रिपीट इट, आई एम नेवर गोइंग टू स्केयर दिस लिटिल एंजल अगेन। और मैंने ना अपने पेन को ऐसा बांधा अपने अंदर, और हम्म, मैंने अपने आपके साथ एक कमिटमेंट किया कि बॉस, इस गेम को तो रूल मैं करूंगा, मेरा पेन नहीं, आई एम गोइंग टू रूल दिस गेम। हम्म, दैट वाज द पॉइंट व्हेन रेजिलियंस, आई फेल्ट माय रेजिलियंस। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई नेवर केयर्ड अबाउट माय ब्लाइंडनेस। हाँ, हम्म, तकलीफ हुई, तकलीफ है, दैट्स अ हम्म, डिफरेंट, थोड़ा इमोशंस है, बट हम्म, resilience point of view, from that point I never look back. चैलेंजेस हम्म, आए, मैंने बोला नहीं, करते हैं, चल, रोना भी आया तो रोते रोते करेंगे, पर करेंगे जरूर। हम्म। थिंग, that was when I found my resilience inside me. Wow, wow, that is so beautiful. God bless you, and you have a lovely daughter. I think she was the reason of your strength, and she's still there with your reason of your strength. Undoubtedly, undoubtedly, मैं हमेशा कहता हूँ, definitely, following the process, me and my wife have given her the birth, but Huh. she has given me the life. Wow, wow, I touch wood. always say this, I always Lovely. say this.
That is such an inspiring story, Kushal, and I think it's a very emotional story. But it also teaches us कि हैं या हमें लगता है कितना worst life है या why God, why me? I think every day we should just sit and we should be thankful to what God has given us, rather Definitely, than cribbing, crying, and always cursing things. So जो मिला है यार उसके लिए तो पहले thankful हो जाओ. मतलब this is definitely, such definitely. a I so. always say this. I always say this to myself. I lost Hmm. my eyesight, but I got the vision. हाँ हाँ actually. आईसाइट आईसाइट जाने के बाद मुझे एक्चुअली लाइफ पर्पसलेस था, मतलब हाँ हाँ सुबह उठा, थोड़ा पैसा कमा लो, नेटवर्किंग कर लो, कितने सही बात काम है. के हैं, कितने काम के नहीं है पता नहीं, हाँ चलते रहो, खाना खाओ, आई डोंट, मतलब आज अगर मैं अपने आप के साथ देखूं तो आई वुड नेवर वांट दैट लाइफ अगेन व्हिच आई वाज व्हेन आई वाज साइटेड. मतलब right. थी, मैं हैप्पीनेस था, आई एम नॉट Hmm. डिग्रेडिंग माय लाइफ, Right, बट right. हाँ it's but the growth that is happening now in all the terms as a person, yeah. वो मुझे अब दिखाई दे रहा है, एंड रिसेंटली Hmm. 2024 से तो आई कैन सेंस दैट, मतलब ऐसा हाँ लगने लगा है कि वो मेहनत अब रंग लाने लगा है. हाँ हाँ. इनिशियल पीरियड में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस, Hmm. खेलना जरूरी है, गेम में रहना जरूरी है, तो बिल्कुल उस बिल्कुल. टाइप का स्ट्रगल इट्स पेइंग बैक नाउ, हाँ. it has started paying back, so that's Wow. Wow. So actually, resilience is often easier said than done. So, what are those practical steps that can parents take to build the resilience in their own lives while juggling family responsibilities? What do you think about that? resiliency. What I think about resilience, I never studied about resilience, और मैंने किताबें पढ़ के मैंने नहीं किया. मैं जो बोल सकता हूँ, आई कैन शेयर इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. व्हाट आई Right. अंडरस्टैंड अबाउट रेजिलियंस, इट्स अ प्रैक्टिस. मतलब Hmm. रेजिलियंस कहाँ जरूरत आएगी? टफ टाइम्स में जरूरत आएगा. रेजिलियंस आपका तब काम करेगा जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो और आपको उस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि उस Correct. रेजिलियंस ही काम करेगा ना, आपका वो हट, आपकी जिद कि नहीं, Hmm. करना है तो करना है, वो भले ही आपके फैमिली को सपोर्ट करना हो, आपकी हाँ. फाइनेंसेस को लेवल अप करना हो, या किसी किसी चीज को अचीव करना हो, किसी भी Hmm. मैटर में रेजिलियंस का Hmm. तो हर चीज में जरूरत लगेगा. Right. व्हाट आई बिलीव इज इट्स अ प्रैक्टिस. इफ आई गिव Hmm. यू एन एग्जांपल, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल. अगर आपको रेजिलियंस बिल्ड करना है ना, तो 5 मिनट का स्पेस बना लो. फॉर Hmm. एग्जाम्पल, आई टेल यू इट इन अ डिफरेंट. अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे Hmm. का अलार्म लगा लिया, ट्राई टू वेक अप एट 4:55, 5 मिनट जल्दी, Wow. और रेगुलर कंसिस्टेंट. जिस हाँ. दिन टूटा उस दिन मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि दिस गेम इज ऑल अबाउट एनर्जी. आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट Hmm. करना होगा. वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी Right. जिम्मेदारी है. आपकी एनर्जी, आपकी खुशी, आपका ग्रोथ आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं. Right. Hmm. Hmm. जिस दिन Wow. टूटा आप जिस दिन टूटी आपकी कंसिस्टेंसी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट डे इज अगेन डे नंबर 1. कोई बात नहीं, हाँ, that's कोई बात नहीं. beautiful. गेट बैक 5 मिनट अगेन. और जब Hmm. भी बोर हो रहा है, जब भी यू आर वर्किंग ऑन अ बोरिंग टास्क, बिलीव मी, बोरिंग टास्क आर समथिंग व्हिच कंट्रीब्यूट्स फॉर योर ग्रोथ. राइट? हाँ, true, करेला true. खाने में सबको कड़वा लगता है, लेकिन आइसक्रीम दे दो, शुगर पेशेंट भी खाना पसंद करेगा. हाँ, करेक्ट? हाँ. मीठी चीजें सबको पसंद है. मीठी चीजें लाइक सरफेस लेवल पे अलग है, बट Hmm. इफ यू आर हियर फॉर रियल सक्सेस, दैट मीन्स कड़वी चीजें लेनी होंगी. इफ यू हैव Hmm. टू टेस्ट दोस बिटर थिंग्स, एंड यू हैव टू पुश योरसेल्फ एवरी टाइम. जब भी आप अपने टास्क पर काम कर रहे हो ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा करो. पांच Wow. मिनट Hmm. बिलीव Hmm. मी, आई हैव सीन सक्सेस हैपनिंग इन 5 मिनट्स. मेरे Right. खुद के उसमें हुआ है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बोला नहीं यार जरूरी तो है, लेकिन आई एम बोर्ड, मैं अब थक चुका हूँ, माइंड हाँ, इज 5 मिनट कर ले, और उस 5 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है विच हैज ब्रॉट मनी और सक्सेस टू माई लाइफ. हाँ, wow, wow. 5 मिनट्स. सो यहाँ पे रेजिलियंस बिल्ड होता है, प्रैक्टिस. Hmm. सो दैट्स व्हाट हाँ, आई थिंक. wow. Both of the tips are so powerful. मुझे ये 5 minutes वाला ट्रिक हमेशा याद रहेगा. क्योंकि ये 5 मिनट पहले उठो या फिर मतलब if you're not doing it, start from the first day. Okay, so today then it becomes that today is my first day to start back again. So that करेक्ट. is a power of resilience. Come back, bounce back, and do it again. डेफिनेटली, Don't यस. run away from the situation because obviously it's boring. So boring things also it's important. That only creates resilience. ये अब मुझे करेक्ट. याद यस, रहेगा. वही रेजिलियंस बिल्ड करेगा, फॉर श्योर. हाँ.
हाँ, right, right. So, as parents, हमें we want to model resilience for our kids. Okay. So, what are the ways we can teach them to stay strong and overcome struggles in their own lives? वो कैसे करेंगे? Okay, there are two powerful words which you used in your questions, Swati. One is Hmm. model resilience and teach. Hmm. We Hmm. cannot teach anything to kids. It's Hmm. impossible. Hmm. They Hmm. learn on their own if you do something right. आप Right. जो भी कर लो वो तो मॉडल करेंगे, Hmm. वो Hmm. तो मॉडल करेंगे। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आई डोंट अलाउ माय किड टू ईट एंड वॉच टीवी साइमल्टेनियसली। Hmm. नहीं तो नहीं। आई एम लाइक वी आर Yeah. लाइक यूज्ड टू सिट ऑन ग्राउंड्स एंड ईट फूड टुगेदर। वही प्रैक्टिस चलेगी। अब वो पूछती है क्यों? मैंने बोला देख, माइंड इज समथिंग विच यू हैव टू प्रोटेक्ट। माइंड की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। Hmm. Now, Hmm. I will tell you, you are in a growing age. If needed, I'll tell 1000 times. मुझे प्रॉब्लम नहीं है। But हाँ. if you want to be a good, if you want to grow, you have to take good habits. और Hmm. बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स में ना, बैड हैबिट्स इजीली पिकअप हो जाती है क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है। गुड हैबिट्स को रोज प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ. करेक्ट नाउ। अब इसमें एक क्वेश्चन आया। एक बंदे ने मुझे बोला, ये सेम टू सेम सिनेरियो मैंने किसी को रेकमेंड बोला था कि ब्रदर डोंट यूज मोबाइल वाइल स्लीपिंग। और हाँ. मैंने एक रील बनाया था, तो उसने मुझे सीधा मुंह पे बोला, यार कुशल, तू तेरी तो आंखें नहीं है, स्क्रीन तो दिखाई नहीं देता, तो तेरा बोलने का मतलब समझेगा कौन? वो मुझे लगा, अरे हाँ ये बात तो सही कर रहा है, मुझे तो स्क्रीन दिखाई नहीं देता, मैंने मोबाइल का ज्ञान तो बांट दिया। और वो सवाल बहुत दिन तक मेरे दिमाग में रहा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। बात तो मेरी सही है, जो मैं कहना चाह रहा हाँ. हूँ, डोंट लुक एट स्क्रीन वाइल स्लीपिंग, इट हैज अ मैसेज, लेकिन मैं Yeah. हाउ कैन आई डिलीवर दिस? कुछ दिन के बाद Hmm. इसका जवाब मेरे को आया। मैंने बोला, हाँ. ब्रदर आई कैन नॉट सी स्क्रीन्स फेयर इनफ, मुझे स्क्रीन का लाइट कर ही नहीं सकता डिस्टर्ब, हाँ. हाँ. तुझे करेगा। क्योंकि मोबाइल स्क्रीन आर वेरी डेंजरस ड्यूरिंग नाइट टाइम्स। वो तेरे मेलेटोनिन को, रिलैक्सिंग हार्मोन्स को हर्ट कर रहा है, तेरी नींद हम्म. खराब ऑन अ लॉन्ग रन। तेरी एज के चलते चलते 2 घंटे की नींद खराब हो सकती है तेरी। हम्म. और मैंने बोला, फील तो हो सकता है, आई कैन फील, यू कैन ऑल्सो फील, फॉरगेट अबाउट आई साइट। Yeah, yeah, So what I'm trying to say is, kids will follow what you do. As a absolutely. parent, what you do, whatever you do. Now Hmm. my kids ask me like, how do you work on system when you can't see? I हाँ. say, there is a system. Do you want to learn it? वो बोलती है यस। अब जैसे जैसे उसको कंप्यूटर का नॉलेज आने लगा, अब कीबोर्ड वो सीखना चालू कर लिया उसने, उसको कीबोर्ड के अल्फाबेट्स पता चल गए। कभी कभी हाँ. आती है, शी इज लाइक हाँ टाइपिंग, आई वांट टू टाइप, और मैं उसको रोकता नहीं। अगर बिजी हूं तो बोलता हूँ गिव मी 10 मिनट्स, आई गिव यू आफ्टर 10 मिनट्स। अगर फ्री हूँ, मेरे पास स्पेस है, तो मैं उसको कीबोर्ड दे देता हूँ, हैव अ टाइपिंग। अब उसको चलते चलते, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी लाइफ में अंधापन अचानक से आया है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। बट हम्म. इफ आई टीच माई डॉटर टू लर्न दिस काइंड ऑफ स्किल्स, मे बी कल वो सोशली किसी की हेल्प करे, ब्लाइंड कम्युनिटी की। Right. राइट? सो एटीट्यूड पास ऑन हो रहा है काम करने से। मैं उसको सिखा नहीं रहा हूँ, वो देख के मुझे सीख रही है। Hmm. एंड Wow. सेम थिंग हैपेंस विद हर मदर आल्सो। उसकी मदर के भी उसने स्किल्स उठाए। नो, दैट हैपेंस व्हेन वी डू Absolutely. हाँ. समथिंग। वो Hmm. मॉडल कर Hmm. रही हो, यू कैनॉट, वी कैनॉट टीच एनीथिंग। सो हाँ. हाँ. दैट्स व्हाट Wow. आई थिंक। That is so beautiful. Absolutely. Because मॉडलिंग का मतलब ही यही है कि हम रुके, एग्जैक्टली, हम अपने बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं वो हम खुद करें। करेक्ट, फॉरगेट अबाउट आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हो। आप पहले खुद ट्राई करके देखो वेदर यू आर एबल टू डू इट। इफ यू आर एबल टू डू इट, यू डोंट हैव टू टीच योर चाइल्ड विल बी डूइंग इट। डेफिनेटली, डेफिनेटली। रिसेंटली लाइक इफ आई टेल यू स्वाति, रिसेंटली कम्युनिटी कॉल चल रहा था, एंड आई सजेस्टेड दिस कि बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे पेरेंट्स थे वहां पे, एंड किड्स वर लाइक 7 years, 10 years, 12 years, 14 years, इस एज के बच्चे थे पेरेंट्स के। तो वाओ। हाँ। आई गेव दिस एग्जांपल कि प्रोटेक्ट योर चाइल्ड्स ब्रेन। क्यों? क्योंकि हम्म. दिस इज द वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट गैजेट्स, गैजेट्स आर गोइंग टू रूल अस, राइट? तो उनको हाँ. डिफरेंशिएट करना सिखाओ। तो मैंने खाने का एग्जांपल दिया था, तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, उसने बोला कि आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड माय किड वाज ऑब्जर्विंग मी। आफ्टर अ वीक्स हम्म. टाइम, my kids saw that my dad is sitting on ground on a mat and eating food without TV. पहले तो पूरी फैमिली बैठ के देख रही थी। My kid हाँ. didn't tell me anything. He started joining me on floor.
and started हाँ, eating with sitting wow, beside me. तो वो wow. वहां पे spread होता है, and that is a हाँ, winning situation. That is a winning situation. that's so true. So in this, I want to share my story also. Please, So please. basically क्या होता है, रिभव ना मेरा छोटे वाला, ही इज 6 year old, ठीक है। तो उसको ना रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत प्यार है। एक तो क्या है, बचपन से ही मैंने उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह ही पाला है, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ वेरी रूटीन ओरिएंटेड पर्सन। सब कुछ मुझे लिखना होता है, टू डू लिस्ट चाहिए मेरे Nice. गोल्स क्या होने चाहिए। तो मतलब मेरा वो टू डू लिस्ट इज लाइक, जैसे बोलते हैं ना, इट इज एब्सोल्युटली लाइक माई बाइबल, बिकॉज Wow. इफ आई डोंट हैव इट आई कांट डू इट, मतलब आई नीड इट फॉर श्योर। तो अगर हमारे घर में रूल है कि हम सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे टीवी देख सकते हैं, इट इज Nice. लाइक फ्रॉम लाइक 4 years हमने ये रूल्स फॉलो किए कि Mhm. हम सिर्फ सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे ही टीवी देखेंगे बच्चों के साथ, या बच्चे सिर्फ 1 hour फ्राइडे सैटरडे देखेंगे। तो क्या हुआ, मोहित माय हस्बैंड वाज अ लिटिल टायर्ड, लाइक कि पूरा दिन बहुत काम करके पापा ने टीवी चलाया। रिभव केम अप, हाँ पापा टुडे इज ट्यूसडे, हाउ डेयर यू, और फट से टीवी बंद किया। मम्मा Wow. पापा इज ब्रेकिंग द हाउस रूल and उसके father could not say anything because at the end of the day he was right, and we switched off the Exactly. TV and we actually played that day, मतलब we played Uno cards and all that, and Correct. it was the best evening possible, and my Correct. husband still remembers that day कि किस तरह उसने ऐसे react किया as if मतलब कितना बड़ा प्रलय आ गया घर में how You, dare you पापा you you said a very beautiful thing. You said a very beautiful thing. That have space of understanding. Rule हाँ तो बन गया, लेकिन बड़े भी गलती करते हैं. Like there are हाँ many a times मेरी बच्ची ने भी मेरे गलते पॉइंट आउट किया है, और मैंने उसको ये नहीं किया कि यार तूने ऐसे कैसे बोल दिया, वो स्पेस दिया मैंने उसको। यस, यू right पॉइंटेड माय मिस्टेक, आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पता नहीं अचानक से, एंड आई डोंट टेक क्रेडिट ऑन माय ओन। मुझे हाँ लगता है कि ये सारा बिहेवियर ना मुझे मेरी बेटी की वजह से ही आ रहा है। right आई right गिव ऑल द क्रेडिट टू माय डॉटर फॉर दिस। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है ना, वी ऑल्सो बिकम मोर माइंडफुल। लाइक डेफिनेटली। हम पहले, हम जैसे बोलते हैं ना, एक खुला शेर होता है, और एक जब माँ बाप बनने के बाद ना हम जो बंधे हुए शेर हो जाते हैं कि हमें पता है अपनी बाउंड्रीज एंड वी शुड नॉट क्रॉस इट बिकॉज वी वांट टू मॉडल इट दैट वे। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग अ कपल। Like as a couple you can cross those boundaries, or you can probably not have any boundary, but as a parent you would not want to do that. As a parent you want एग्जैक्ट to take a step back and think कि मतलब क्या मेरे को ये करना चाहिए, मतलब is it really, मेरा बच्चा क्या सीखेगा यार। डेफिनेटली डेफिनेटली वो फर्क तो पड़ता है। यू सेड इट वेरी राइट, वेरी राइट। So now next question for you is on goal setting. Okay, now you emphasize a lot on productivity and goal setting in your coaching. How can parents balance their personal productivity with the unpredictable demands of parenting? वो कैसे balance create करें? ओके, सो इसका जवाब वैसे तो आपने दे दिया मेरे बताने से पहले, एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। Hmm. Oh wow. Okay. यू मेंशन्ड अबाउट टू डू लिस्ट, Hmm. एंड Hmm. वो टू डू लिस्ट के साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि Hmm. Hmm. अल्टीमेटली you have to know where you are headed and where you want to reach out by the end of the day. It's Wow. not about reaching out to the destination, वो उतना Hmm. टाइम में पहुंचना ही है, नहीं, वो जरूरी नहीं है, Hmm. बट Hmm. उस रोड पे चलना, उस नेविगेशन मैप पे चलना, रोड मैप पे चलना जरूरी है। Hmm. Hmm. क्योंकि Hmm. समझो यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर्स, Yeah. ठीक है। Yeah. Hmm. वहां पे ट्रैफिक होगा भाई, किसी रोड का मेंटेनेंस चल रहा होगा, ठीक है। देयर Hmm. लॉट ऑफ मतलब अनप्रेडिक्टेड थिंग्स हैपेंस, राइट। सो यू कैन Correct. नॉट एक्सपेक्ट कवर दैट 300 किलोमीटर्स एट वंस, ठीक है, और एक बार ही Hmm. तो होगा नहीं। सो बट बीइंग ऑन द रोड, बीइंग ऑन ट्रैक इज इम्पोर्टेंट। आप रेस्ट ले Hmm. लो बीच में, दिन खत्म हो गया, रेस्ट ले लो, नेक्स्ट डे फिर रिस्टार्ट करो, वैसे कंटिन्यू करना जरूरी है। टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी Hmm. वेरी, बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया होगा, यू डोंट क्रिएट अ टू डू लिस्ट, आप दिन भर Hmm. सोचते रहोगे मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आप हाँ, पचासों हैं, देयर आर हाँ। टन्स ऑफ वर्क एट इन योर हैंड, लेकिन मैं हुँ, क्या करूं यार, समझ में नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आपने एक बार टू डू लिस्ट बना लिया ना, मुझे ये हाँ, करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, पिक अप वन थिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन राइट, इट। सो वो राइट। गोल आपको जाना कहाँ है, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, and then हुँ, planning is very 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 important. वाओ! And in case हुँ, of
वैसे मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मेरा निश नहीं है वो, लेकिन आई कैन टेल व्हाट वर्क्स। ठीक है, हम्म जैसे आपने हम्म टीवी का वो बताया ना कि 1 घंटा फ्राइडे या सैटरडे या वीकली ट्वाइस, तो एवरी अल्टरनेट डेज या वीकली ट्वाइस कुछ वो फैमिली टाइम वाला हमें फिक्सअप करना होगा। ये मैंने हम्म अपनी रूटीन में लाया, बिलीव मी, ये पूरी तरह से प्रैक्टिस में नहीं आया, बट दिस इज व्हाट समथिंग इन ये गोल लिस्ट में, बकेट लिस्ट में डाल के रखा है कि दिस इज समथिंग हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब उसके वाओ, ऊपर एफर्मेशन चल रहे हैं मेरे कि ये क्वालिटी टाइम बहुत हाँ, जरूरी है ना, वो बहुत जरूरी। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग विथ यू एंड योर स्पाउस, आपके और हम्म आपके बच्चे के साथ, वो हम्म बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी। तो ये रोज नहीं होगा, क्योंकि हाँ बच्चे भी आएंगे, उनका भी होमवर्क है, आपका भी काम है। तो मुझे हाँ लगा यार रोज नहीं हो रहा तो हफ्ते में 2 बार तो हो, हाँ राइट? हाँ वेनसडे सैटरडे कर लेते हैं। हाँ 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 वो काइंड ऑफ, और 1 घंटा बोल दिया कि 8 से 9 बजे विल हैव फन। हाँ सो दिस इज समथिंग व्हाट आई थिंक, ये अलाइन होते होते एंड अगेन यहाँ पे रेजिलियंस बिल्ड भी होगा, क्योंकि हर हम्म, वेनसडे हमें पता है कि यार कुछ काम नहीं लेंगे, बस बच्चों के हाँ साथ फैमिली के साथ। हाँ, सो राइट, दिस इज समथिंग इवन आई एम प्रैक्टिसिंग, बट वाओ, सुन के ऐसे लिखने से या हल्का हल्का इम्प्लीमेंट करके ऐसा लगता है कि पॉसिबल है। पॉसिबल है, हाँ, बिल्कुल है, हाँ हाँ। दिस इज व्हाट आई कैन टेल। वाओ वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपने कहीं भी ये नहीं बोला कि एंड दैट शोज योर ट्रूथफुलनेस कि मैं बिल्कुल कर पा रहा हूँ या यही करता हूँ मैं। आपने बड़े प्यार से बोला कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कर सकते हैं हम, एंड वी शुड डू इट। So this is a very that's a beauty of a humble and an honest person, I think. कुशल, यू से इट वेरी एफर्टलेसली, और आपकी वो सच्चाई ही आपको मतलब इट टेक्स पीपल्स हार्ट। आई थिंक दैट आई थिंक आई हैव टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू। So which moves to our next question: what is that one mindset shift or habit you believe that every parent should adopt to navigate tough times with confidence and purpose? कॉन्फिडेंस एंड पर्पस, राइट? हाँ, एक माइंडसेट शिफ्ट क्या हो सकता है या एक हैबिट क्या हो सकती है? एक हैबिट, like recently, I'll tell you the scenario. I was invited as a chief guest in an school events जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, ओह, and लवली। where my kid goes. तो हम्म, 2-3 मिनट का कुछ स्पेस था वहां पे, उन्होंने दे आस्क्ड मी टू स्पीक समथिंग, हम्म, एंड मेरे अंदर से कुछ वो आ रहा था कि दीज आर द प्रैक्टिस विच इवन आई एम डूइंग। सी, वाह, इट्स एवरीडे प्रैक्टिस, मतलब आज मैं जो हूँ कल अलग रहूंगा, क्योंकि मैं इवॉल्व हो रहा हूँ डे बाय डे। क्योंकि आज हम्म, मैंने नई चीज सीखी है, अब उसको प्रैक्टिस में लाना है। क्यों? और राइट, नया नया जब प्रैक्टिस करूंगा तो मैं गिरूंगा, हाँ मेरी हाँ, इनकंसिस्टेंसी आएगी, रीजंस आएंगे, मुझे उन्हें टैकल करके फिर से स्टैंड अप होना है, कुछ भी हो, एक्स वाई जी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, करेक्ट, या हाँ, जो भी वट एवर द रीजंस आर, डेफिनेटली फॉल्स तो होंगे। So out हम्म, of this, these are the three elements which I can say, which I've started working on with like my हम्म, wholeheartedly. I believe I'm started working. लेकिन फिर से मैं बोलूंगा, गिर भी रहा हूँ, but हम्म, I'm holding on to my practice, या, because this game, the game that we are into, parenting, coaching, the हम्म, society की responsibility भी तो है हमारी, social responsibility भी तो है हमारी। करेक्ट, So with everything, I believe there are three practices that we need to do. और मैंने स्कूल में भी यही बोला था। हम्म, One is forgiveness. ओके, We have to practice forgiveness so that our kids also learn from us. हमें माफ करना सीखना होगा। हम्म, जो भी हो, by the end of the day, आपको यूनिवर्स, भले ही वो इंसान आपके सामने हो ना हो, सिचुएशन हो ना हो, बट एम आई ऑडिबल? या लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल अच्छे से, हाँ सॉरी, मेरा सिस्टम कुछ बात कर रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया। So हाँ, by the end of the day, you have to just ask for forgiveness and give forgiveness to the universe. हम्म हम्म And second is being grateful. Gratitude बहुत जरूरी है भाई, बहुत बहुत जरूरी है। आपके पास हम्म, जो हो, उसकी जो मिला आपको, उसके लिए हाँ, ग्रैटिट्यूड। एंड नंबर 3 इज लव। हम्म प्यार करना सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को। हम्म, ये आपने माइंड शिफ्ट की बात करी थी। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम वाह दैट वी हैव टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड लव। क्योंकि वाह, ये गेम तो एनर्जी से बदलेगा, एंड लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। लव, यूनिवर्स झुकेगा उसके सामने, यूनिवर्स सिर्फ प्यार के सामने ही झुकता है।
Wow. Wow. इसी का. So these are the things. Beautiful, beautiful, beautiful. I mean, this is like the golden tip, I would say. This is a golden nugget which we have to carry it from you. uh, s- And so, yeah. कुशल आपका ना वीडियो फ्रोजन हो गया है for some reason. Oh, Hear just give. you, but आपका वीडियो फ्रोजन है. Am I audible? I'm visible. हाँ आप ठीक है. यस यस यस. क्या हुआ था? वो वो मेरा स्क्रीन पे कुछ आ गया था. इस मेरा सिस्टम भी बात करने लग गया था ना, मुझे लगा कट गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या. ये. हाँ हाँ नहीं अब हम सुन सकते हैं अब हम आपको देख सकते हैं perfectly all थैंक right. यू. I'm so. So that finishes our questions with you. But I have prepared a fun, and we want to know you more. So we have a Oh, fun and a cute rapid fire for you. So I would like you to answer those rapid fire if you're okay. Can I have your permission for that? I would love to do that. Okay. Let's. Okay. मैं भी तो Yeah. अपने आप को समझूं थोड़ा सा. So one word that describes you. One word that describes me. Yeah. Stubbornness is in a positive way. Okay. Can I tell you about one word which I feel I can describe you? Yeah, please. Powerhouse. Oh, ho, 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 ho. Thank you, Baba, thank I feel a lot of power in you. So you are perfectly a powerhouse. Your thank you, thank favorite you. productivity tool. 5 seconds rule. Okay, nice. Lovely. So, Coffee or a tea person? not both of them. Then milk. Nahi. Bonvita. Yes, caffeine is the thing, but I consume a different energy drink, Oh, which has lovely. caffeine, but I am not someone who would take coffee or tea. Okay. Okay. I'm soft ka pani. So if that, Oh, nice. That I also love works. that. That is something which I needed for the whole day. Ah, nice. So, a book every parent should read. Atomic Habits, and if I'm allowed to suggest one more, that Yeah. is like uh, the power of your subconscious mind. Oh, lovely. I have both the books. I have read half Must of Atomic Habits, must but read. दूसरा मैंने अभी read नहीं किया है. One habit that changed your life. Positive self talks. Yeah, self talk. Self-talk. Oh, lovely. यस, एफर्मेशन मतलब कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना है, करना है, करना है. ये हाँ ऐसे ही बात है. हाँ हाँ. Wow, wow. That's lovely. That's lovely. You're a early bird or you're a night owl? Early bird. Okay, lovely. A quote you live by. A quote I live by. Okay, there's one statement which out of nowhere my mind said this. I हाँ. love repeating it to myself. Okay. And अब ऐसा समझ लो कि खुद मुझे मुझे नहीं पता, लेकिन निकला मेरे ही अंदर से. आई नेवर रेड इट एनीवेयर. देयर इज वन Okay. थिंग गोइंग टू स्टॉप ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, दैट इज कॉल्ड डेथ. But Okay. before that, let us allow nothing to stop us. Let's be unstoppable. Oh, wow. This is very powerful. You are one of those unstoppable kind of a guy. So, Yes. That's thank you. what is your go-to way to unwind? Although I know the answer. Repeat that question. I miss you. What is your go-to way to unwind your day? जैसे हम थके हुए हैं बहुत ज़्यादा. How do you unwind that day? What is that Okay, go? I prefer listening to spiritual stuffs. Okay. Okay. मतलब सब खत्म हो गया, मतलब मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, which goes into my subconscious mind. Okay. So Got it. that has helped me a lot, a lot. Wow. Okay. Wow. A skill every parent should teach their kids. A skill that every parents to upgrade the will, I would say. मतलब will को motivate करना हमें सीखना हो, क्योंकि will अगर आ गया तो skill आ ही जाएगा. Oh, nice. यार मतलब you're a poet or what? हाँ, अभी अभी लिखना स्टार्ट किया है मैंने. So success in one word. Detachment. Oh, lovely. Why do you say that? Detachment. Because I feel success को
वो आउटकम होना चाहिए बस काम का, मतलब मुझे उससे डिटैच रहना है ताकि मैं और ज्यादा कर सकूं, क्योंकि सक्सेस अगर सर चढ़ गया तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गुडनेस यार, और मतलब एंड वन थिंग दैट कनेक्ट्स मी विद दैट इज, अगर सक्सेस मुझे सर नहीं चढ़ रहा है तो फेलियर मुझे छेड़ेगा नहीं। नाइस। यूज दीज वर्ड्स, मुझे तो लगता है ये आपके गोल्डन नगेट्स है, कहीं नहीं छोड़ना। नहीं, ये मैंने किताबों में लिखे हैं, मतलब इट इज, आई हैव रिटन दिस, इफ सक्सेस डजंट गेट ऑन योर नर्व देन फेलियर विल नेवर ट्रबल यू। Wow, that's lovely. By the way, to tell everybody, you have written a book, so everybody should know about that. Kushal, you have to talk about your book also. ओह, आफ्टर दिस रैपिड फायर और राइट No, नाउ? right now we want to know. मतलब जब आ ही गई है बात, छिड़ी गया है, तो why not? ओके सो यस, उसकी भी पीछे मतलब बहुत सुंदर कहानी है, इफ आई एम अलाउड टू शेयर दैट। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज फील फ्री। सो यस, द बुक्स नेम इज द अनस्टॉपेबल यू, Hmm. जर्नी ऑफ अ गाय एम्ब्रेसिंग लाइफ आफ्टर ब्लाइंडनेस। Oh wow, I love the ये name. सब टाइटल है, एंड Hmm. इट्स अवेलेबल ऑन यू नो क्लेवर फॉक्स का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे है, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है। Wow. एंड वो लिखा मैंने मजाक में था, मजाक इन द सेंस ऐसे हल्के में नहीं, बट पीपल वर लाइक कुशल, अभी 23 में मैंने लिखा, 23 नवंबर Hmm. दिसंबर में मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुशल स्टोरी अच्छी है यार, लिख दो लिख दो लिख दो, एंड हाँ, पीपल है किसी की मोटिवेट हो जाए तो मतलब इफ पीपल गेट इंस्पिरेशन दैट्स अ गुड थिंग। मैंने right. बोला नहीं यार, मैंने बहुत कैजुअली जी है जिंदगी, मैंने बस एक्सेप्ट किया, दैट वाज माय डिसीजन टू बी अ फाइटर, आई चोज दैट डिसीजन, और मैं चल रहा हूँ। मैंने मतलब आई हैड नेवर थॉट इन दैट राइटिंग अ बुक, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में था कि कभी ना कभी बुक लिखेंगे। अब वो ऑथर वाला बैकग्राउंड तो है नहीं, आई डोंट हैव द बैकग्राउंड ऑफ ऑथर। आई एम ऑडिबल? हेलो, हाय स्वाति। Yeah, Kushal, can you hear me? या एम आई बैक? मैं Yeah, पता yeah. नहीं। ओके, हाँ हाँ हाँ, you're back, you're सो back. मुझे आवाज ही नहीं आई, मैं बोला क्या हो गया, मैंने बोला पावर और तो नहीं निकल गया। हाँ हाँ हाँ, यस, मेरे को भी वही लग रहा था, कुछ तो हुआ हमारे। नो बट हाँ, प्रॉब्लम, समझ नहीं आया क्या ग्लैड, हुआ। या थैंक यू या थैंक वो यू, बैक, वो हम बैक, वापस यस। आ गए। सो आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग माय बुक एंड पीपल वर लाइक, मैंने बोला चलो अब लिख ही देते हैं, एंड आई हाँ, आई सीरियसली स्टार्टेड राइटिंग इट इन अ वेरी कैजुअल वे। ओके। एंड मैंने आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाया बुक का कि नाम क्या होगा, कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना, नाम भी तो ऐसा हाँ हो कि कनेक्ट भी तो हो। मैंने हाँ बोला चलो यार ये टाइटल अच्छा लग रहा है, टाइटल बना दिया। फिर बहुत समय तक सबटाइटल सोचा, मैंने वो भी कर लिया। चैप्टर्स बनाए, चैप्टर्स के बाद आई स्टार्टेड राइटिंग कि हु वाज कुशल व्हेन ही वाज साइटेड, कॉलेज डेज कैसा था, व्हाट हाउ डिड आई, हाउ वाज आई ब्रॉट अप फ्रॉम माय पेरेंट बाय माय पेरेंट्स। वाओ। वो करते करते फोर्थ चैप्टर लिख रहा था, एंड मुझे किसी ने बोला कि कुशल व्हाट इज योर लॉन्च प्रोसेस। मैं बोला लॉन्च प्रोसेस क्या है, अब मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। तो उन्होंने बोला कि किंडल पे अपलोड करते हैं, लेट्स अपलोड इट ऑन किंडल। हाँ एंड हाँ हाँ द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन सेड वाज गेट योर कवर डिजाइंड। अब मैं हाँ ग्राफिक डिजाइनर, मेरी फ्रेंड है, आई सेड लाइक कैन यू डिजाइन अ बुक कवर फॉर मी विद दिस हाँ डायमेंशंस एंड ऑल, एंड शी हाँ। गेव मी 7 सैंपल्स आउट ऑफ इट। वाओ। 7 samples, what I did, I copied from her window and I posted in my family group. हाँ And see, I communicate with my family with voice message, okay, voice notes. हाँ। कभी कुछ बोलना होगा तो हाँ बाहर हाँ। से। एंड माई मदर राइट। कैन, माई मदर डजंट नो टू रीड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी का होता है तो वो पढ़ लेती हैं। अब हाँ। वॉइस नोट इज ऑल्सो फेवरेबल टू हर एज वेल, सब सुन लेंगे। राइट। तो व्हाट आई डिड वाज आई फॉरवर्डेड द स्क्रीनशॉट, मतलब जो कवर फोटोज थे वो तो भेज दिया, बट सेंडिंग अ वॉइस मैसेज वाज रह गया। अब और इट वाज जस्ट फ्यू डेज, आई टोल्ड कि आई स्टार्टेड राइटिंग बुक ऑन माय लाइफ स्टोरी। मैंने हाँ अपने घर में भी बोला, एंड माय मॉम वाज लाइक वाओ, आपको लिखना चाहिए, इट्स गुड, यू नो। डैड भी खुश हुए, वाइफ भी हाँ बोली यार गुड। एंड with that cover pic what happened, my I sent it in my WhatsApp group, family वाला group. My mom thought कि इसका बुक लिख के खत्म हो चुका है, she uploaded it on her WhatsApp status. हाँ
अब वो व्हाट्सएप स्टेटस को देख के मेरी भाभी ने बोला कि प्लीज सेंड दिस पिक टू मी। उन्होंने भी रख दिया व्हाट्सएप स्टेटस, एंड माय सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी, शी इज अ हाँ, लेक्चरर इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ओ लवली, हाँ। उनका स्टेटस देखा कॉलेज के प्रिंसिपल ने, एंड प्रिंसिपल ने बोला दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, गेट मी अ बुक फॉर मी। अब मेरी माँ मुझे कहती है प्रिंसिपल सर तुझे पूछ रहे हैं, ही वांट्स टू टॉक टू यू, ही वांट्स टू गेट योर बुक। मैंने बोला अब उनको कैसे पता चला कि मैं बुक लिख रहा हूँ? मुझे स्टोरी पूरी पता चली, एंड आई वाज लाइक बॉस, मैं फोर्थ चैप्टर का सिर्फ अभी मैंने टाइटल लिखा है, एंड नाउ आई फेल्ट ली टाइगर इज रनिंग बिहाइंड मी एंड टाइगर इज चेजिंग मी एंड आई हैव टू रन नाउ। हाँ, Believe हाँ, me, I started writing it. Within the next 10 days, I completed my book, writing up, wow, and I got love, 50 copies order from the college. And I wow. also got Amazon #1 bestseller tag on Amazon. ओहो, लवली। So, ऑसम, ये तो that's, बहुत ही जबरदस्त है, मतलब हाँ, ये it's all the, तो। मैं उस बुक को तो पूरा क्रेडिट अपनी मदर को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हुआ ना ये। So हाँ, the blessing is from all from my टच mother. वुड। अरे माँ की ब्लेसिंग तो हमेशा जबरदस्त होती है Definitely, यार। माँ की definitely, ब्लेसिंग definitely. से तो अच्छी कुछ चीज नहीं है। Yes, and so that's the story of my book. The book name is वाओ, The लवली। Unstoppable You by So, Kushal Kulkarni. so please buy his book and make sure that you're reading his book because it's all about his journey. And if you all want, I'll just share the link of the book so that आप buy कर सकते हो, Amazon में Definitely. available है। तो it's Unstoppable You, right? Yes, So it's the un- Unstoppable You by Kushal Kulkarni. Please go yes. ahead and grab your Thank copy you. बिकॉज Thank you. यार हमें भी तो जाननी है इतनी अमेजिंग स्टोरी, इतनी अमेजिंग बंदे को जाना है। मतलब आई एम प्रिविलेज टू नो यू। मतलब अब तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को छोटी छोटी बीमारी और प्रॉब्लम्स लगेगी नहीं, कुछ है। Wow. क्योंकि मुझे The- हमेशा लगेगा यार, मतलब कुशल कर सकते हैं तो मैं तो कर ही Wow. सकती हूँ। Definitely, definitely. Your success will be my blessing. Believe me. अरे कम ऑन, मतलब यू आर तो, आप तो बस आसमां छू गए यार, मतलब यू आर दैट गुड। Thank you. Thank So you. thank you so much, Kushal। मतलब today's, मतलब I think out of the, I think 20, मैंने ये मेरा 20th wisdom waves है। Wow. Hmm. तो आउट ऑफ 20th, मतलब मुझे सबसे ज्यादा मजा और सबसे दिल से मैंने आज बात की है। तो आई ऑल्दो मेरे इसलिए सारी प्राइसलेस है। All my lives are beautiful, all my lives are something which I very well choose each one of you। तो मेरे लिए वो आप लोग एक्सेप्ट करते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज ईच Yes. एंड एवरी लाइफ इज लाइक, so so it's for my audience also, matlab I choose these lives so that you get a lot of vision for your work, you get understanding on what are we doing, you Def- get insight strategies so that aapki parenting easy ho। So Wow. thank you so much, Kushal, for accepting our invite and giving us such a session, such a beautiful power packed session। I can't tell you, and I can't be more thankful than this। The honor is, the pleasure is completely mine, Swati, and you are doing such a wonderful job. क्योंकि parenting, it's such a great responsibility and very high responsibility, and we need people like you who are teaching everyone like how to parent in a beautiful, that's a beautiful relation, and we are not going to have this beautiful time when our kid is like 1 year, Right. 2 year, 5 year, 10 years, 12 साल बाद में वो टीन एज में जाने के बाद उनका माइंडसेट, उनके दोस्त ही सब बन जाएंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो क्रॉस दैट, राइट? हम भी उस Right. time, तो ये 12 साल तक का उम्र यार बहुत जरूरी है, मतलब थैंक यू सो मच स्वाति फॉर बीइंग यू एंड व्हाट यू डू। No, थैंक no, thank you so much. Thank you so much. So, guys, if you have enjoyed today's session, don't forget to follow Kushal Kulkarni. I'm going to add him as a collaborator on my post so that you can share. Although we are running live on 3 platforms, so I'll just tag his page. So, if you are on YouTube or you're a YouTube viewer, please follow over there as well as Instagram. If you are an Instagram viewer, please follow in both the places so that you can see how beautiful, and every day he comes out with some of the other strategies which are so power packed, and all of the things you can use it in your day to day life. And I think, Kushal, you do live classes also, right? So you you. want to share something about your live classes? Yes, I engaged 21 days productivity challenge. I keep on Wow. launching them,
It's Hmm. like where I take people from whatever your situation is, from zero to till the 21st day. I help them with proper planning, implementation, and organizing the whole system with a power packed review system so that Wow. they drive that day productively. Wow. So, guys, if you are interested in joining that challenge, please go ahead and connect with him. Yes, As I said, I'm going to tag his page so that you can please go ahead and give him, send him personal messages. You can send a voice note. He's very good with replying. So please go ahead and do that. Sorry. feel free. Feel free to And connect. for all the lovely parents, if you want to join in my community, please make sure you can join my community. I have shared a QR code. You can just click on the QR code and join to the WhatsApp community. This WhatsApp community is exclusively for parents if you have any kind of parenting challenges. And I have in the chat box, I have shared the link of Kushal's page also. So, in case you want to follow him right now, please go ahead and follow. And if you have any questions, we would love to take your questions. Anything regarding resilient parenting, anything regarding Kushal's book, anything regarding the 21 day challenge which he mentioned. So please feel free, and we would love to take all your questions. So somebody is saying, okay, dear Kushal, thank you for the lovely session. Kushal ji, can you repeat the concept of 5 minute before and 5 minute after? So, Kushal, would you like to take that? What do you mean by 5 minute after? ओके, 5 मिनट्स आफ्टर मैंने दो तरीके से बताया था. दैट वाज अबाउट रेजिलियंस, बिल्डिंग रेजिलियंस. सो Mm-hmm. वन एग्जांपल आई गेव वाज, इफ यू वांट टू वेक अप एट 5 a.m. फॉर एग्जांपल 5 a.m. 6 a.m. जो भी आपको टाइम लेना है, तो मेक श्योर यू वेक अप 5 मिनट्स अर्ली. Okay. फाइव हाँ मिनट्स वो तो अर्ली, हाँ हाँ या हाँ हाँ. एंड 5 मिनट्स फॉर द वर्क. सपोज यू आर वर्किंग ऑन समथिंग विच माइट फील Hmm. बोरिंग टू यू, उस Hmm. काम पे ना 5 मिनट एक्स्ट्रा काम करो. 5 मिनट्स एक्स्ट्रा. व्हाई? Oh, okay. हाँ Two हाँ. ways. Okay. I One is see. resilience will be built, and second there is a high Hmm. chance कि वो 5 मिनट गेम चेंज कर सकता है. This is my personal experience, and I believe वो 5 मिनट गेम चेंज कर देगा. Success will be, you will be 5 minutes early close to the success. This is what I Wow. would say. Wow. Amazing, amazing, amazing. So Mohammed Salim Dandeli is saying, I love you, bro. You're awesome. Hey Salim, thank you, bhai, thank you. uh, Ruhani is saying, thank you, Kushal. I had a leg pain for last 5 years. Now I think I am blessed. And thank you for telling me that I need to be grateful to what I have. Thank you. Yes, you have to be. You have to be. Whatever it is, with eyes, without eyes, with legs, without legs, with hand, without. अगर सांस ले पा रहे हो तो आपको grateful होना होगा. Because I keep telling, I'm sorry if I'm telling it as some extra, but I love saying this. If you have हाँ. got this day, if you have got this day, अगर आप सांस ले पा रहे हो तो believe me, you are the blessed one, you are the chosen one, because not everyone who slept last night got a chance to wake up this morning. Oh my God. This is very So powerful. always remember that. So सांस ले पा रहे हो तो believe me, you are for a reason here. Wow, wow, wow. Be grateful. Bilkul, Thank yaar, you. Thank you. bilkul. And I think we should not take anything for granted. Don't take your life for granted. Nothing. Nothing. Don't take anything for granted because यार पता नहीं है कौन कब क्या मतलब. इसीलिए तो I डिटैचमेंट का जवाब दिया था मैंने सक्सेस को. बिल्कुल डिटैचमेंट. बिल्कुल बिल्कुल. Wow, that's lovely. So a lot of thank yous are coming for the session. Thank you, lovely session. Bhavani Shah, she's saying thank you, lovely session. थैंक यू भवानी. Uh, Vipul, thank you so much, bro. You are so too awesome. I love the smile in your face. Very powerful man. I can't even think how you're going through, but you are awesome. Sonam is saying, uh, what? क्या नहा हिंदी में है सॉरी क्या आप क्या क्या आप क्या आपकी बेटी आपसे कभी पूछती है कि क्या हुआ पापा पहले देख सकते थे कि नहीं?
यस डेफिनेटली उसके हाँ, उसके आए हैं कुछ इमोशनल सवाल, बट नाउ शी इज ग्रोइंग। आई कुड सी हर मेंटल टफनेस एज वेल। उसने मुझे एक बार पूछा था कि घर में सब लोग देख सकते हैं, सिर्फ आप ही क्यों नहीं देख सकते? हाँ। और दैट क्वेश्चन वाज वेरी हार्ड। जब उसने पहली बार पूछा था तो दैट वाज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। मुझे हम्म, एक सेकंड के लिए ऐसा लगा किसी ने हथौड़ा मार दिया, मतलब व्हाट टू आंसर। बट हाँ। अगेन वो रेजिलियंस वहां पे काम कर गया फिर। वो आपके हम्म। सेंसेस बैक टू, मतलब नहीं कुछ नहीं, इट्स अ पार्ट, मैं समझाऊंगा आपको। एंड आई हैव पिक्ड अप, आई हैव लर्नड अ वे टू आंसर माय डॉटर नाउ। जो वाओ। आंसर मेरे पास ऐसा होगा जो वो समझ नहीं पाएगी, तो मैंने बोला है उसको, इज इट ओके इफ आई आंसर यू व्हेन यू आर 10 इयर्स यंग, 10 इयर्स ओल्ड और 20 इयर्स? दैट्स वेरी स्मार्ट। एग्जैक्टली। हाँ। एक तो क्या होता है, उसका क्वेश्चन अटेंड अटेंड करना जरूरी है ना, बच्चों का क्वेश्चन। हम्म। उसको वो स्पेस मिल जाता है, एंड हम्म। एंड शी इज लाइक, या तो उसको याद होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। अगर हाँ। याद होगा तो वो समय पे समझ भी लेगी कि हाँ हाँ। दिस इज द आंसर। एंड यस, हाँ। व्हेन शी लुक्स एट ओल्ड पिक्चर ऑफ माइन जहाँ पे मैं कार ड्राइव कर रहा था, वो एक बार तो ऐसा जिद कर गई कि कृष्णु ने आपकी आंखें ली कैसे, मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। वो कृष्णा को कृष्ण कह रही। आई वाज वाओ। लाइक, कर ले तू जिद, पता नहीं तेरी जिद में वो दे दे, क्या पता, बच्चों में होता है ना पावर। बिल्कुल पावर होता है भाई, बच्चों में तो बहुत पावर होता है। आई तो यस। कंप्लीटली अग्री विद दैट। So दे now she is हैव very नो। smart. She has been a blessing. I mean, undoubtedly वाओ। she has been a blessing. वाओ। वाओ। सो लॉट ऑफ थैंक यू यार। मजा आ गया। आप बहुत ही पावरफुल हो। थैंक यू सो मच ब्रो। व्हाई इज एवरीबॉडी राइटिंग ब्रो? भाई भाई बना दिया मेरे को। भाई बना दिया सबने आपको। थैंक यू सो मच, बहुत पावरफुल हो। somebody is asking ये प्रोडक्टिविटी चैलेंज इज इट ऑनलाइन या फिर आप घर पे सेशन लेते हो? नहीं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन। ऑनलाइन है गाइस, ऑनलाइन है। इट इज Yes, sir. ऑनलाइन, इट इज नॉट Yeah. सेशंस। Okay. So I think we are mostly covered with all the question. If I have missed any question, please forgive me because I'm trying to scroll three different windows. Oh wow. So अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो please I'm so sorry guys. I really want to take all your questions, but worry not. I am going to tag Kushal in all the pages, so don't worry. अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट। और अगर आप मुझे भी आप अगर टेक्स्ट करते हो या मैसेज करते हो तो आई विल मेक श्योर दैट आई एम सेंडिंग हिज नंबर और सॉरी सेंडिंग हिज pages and so Hmm. that you can connect with him personally, so Yes. don't worry about those things. Yes, just a request, if you are messaging from Swati, अगर आप इस लाइव कॉल को देख के अगर मैसेज कर रहे हो तो जस्ट मेंशन स्वाति's नेम और उनकी कम्युनिटी का नेम, क्योंकि फिर वो समझ पाता हूँ, कनेक्शन इजी बन हाँ, जाता है। राइट राइट। दैट्स अ रिक्वेस्ट। श्योर श्योर श्योर, आई कैन एब्सोल्यूट। प्रायोरिटी पे अटेंड कर लूंगा क्वेश्चंस का। Thank you so much. Absolutely. So thank you everybody, and thank you so much, Kushal, for coming for us today, coming with us today, and inspiring us today. Because I think we all had such powerful day with full of insightful things, lot of productivity tips and strategies, which come straight from you. So it is thank you so much. Thank you. And next Wednesday, we will come with another inspiring topic, which I'm not going to share right now. You can keep thinking and you can keep noticing what will it be. Keep guessing, and I'll enjoy that, your guesses. Until then, stay resilient, stay Yes. inspired, and keep riding the waves of wisdom. Thank you, Kushal. Thank you, Thank you. everyone. Thank you, Swati. Thank you God all bless of you. you for joining. Thank you, guys. Thank you so Thank much. It certainly means a lot. When I see so many of you, it makes me feel so proud that there's something we can connect together. Yes. Thank you, Thank you. everybody. Thank you. Thank you. Thank you.